Good morning, all students. This is Abhishek Khare. Welcome to DPC Role Model Excellence School, Dreamland City, Shuni. Now, student, today will be discuss most important topic related to your book Science of Force and Physics. Is image formation by convex lens. You know, all student. Firstly, the type of images formed by a convex lens depending on position of the objects in front of lenses. Okay. Now we can place the object different position or distance from a convex lens to get different type of images. We can place the object first between optical center and focus, and second at the focus, and third is between focus and second focus of lens, at the focus, second focus, at behind the second focus, and at last is infinity. Okay, now we will discuss one by one. Now student, we will discuss when image formation by convex lens when object placed between optical center and focus f dash. You know student, we have a convex lens. Okay, we have a convex lens with a optical center and focus f and f dash. Here object placed between optical center and focus, this is object AB placed between optical center and focus f dash. Now here AD is first ray, incident ray, get reflected focus f, and symbolic presentation is AD dx reflected ray. Okay, incident ray AD and reflected ray dx. Then second ray AC, get reflected ray is CY. Okay, now हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है जिसमें टू फोकस हैं, ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच पर रखा है. ओके, क्लियर. जिसमें से इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है, ठीक है, लेंस पर, और रिफ्लेक्ट हो कहाँ से होकर जाती है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस एफ से होकर आगे चले जाती है डी एक्स डायरेक्शन में. सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है और सी वाई डायरेक्शन में आगे हो जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. नाउ here to here distance between center optical center and focus is called focal length of convex lens. Okay, clear. Now here AC passing through the optical center, AC ray फर्स्ट रे आपने इंसिडेंट करा दी AD, रिफ्लेक्ट हो गई, सेकेंड इंसिडेंट हुई AC, सीधी चली गई क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन रूल्स. ओके, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. नाउ we produce reflected ray dx, we produce reflected ray dx and cy, where is backward in backward direction. यदि हम इसको थोड़ी पीछे की ओर लेते जाएं और किसी एक पॉइंट पर मिला दें, दोनों रे को इंटरसेक्ट जहां ये पॉइंट करेंगी वहां क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए. ओके, क्लियर. मीन्स thus a dash is a virtual image for this object, real object. Okay, and thus a dash b dash complete image formation for real object, this object. Okay, clear. a b object के लिए ये क्या होगा, इमेज होगी. कैसी होगी इमेज, वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट a point of object. To get the complete form of a dash, thus a dash b dash complete the image of the object ab when our eyes looks into the lens from the right side, it appeared as the right ray coming from the a dash b dash. Okay, means आप यदि यहाँ से कोई देखेगा इस रे को तो ऐसा लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रही हैं इस टाइप से, बट ऐसा नहीं है, ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड इसका इमेजनरी फॉर्म है. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज. अब कुछ कंडीशंस हैं इसकी कंक्लूडिंग विथ इमेज फॉर्मेशन. फर्स्ट, आपको इमेज का क्या बताना है, इमेज कहाँ पर बनी, position of image. Okay, first position of image where, behind the mirror. Okay, first क्या बताना है आपको, behind the mirror. First this is position of the image where, ये देखिए आपको ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या बनी, इमेज. सेकेंड, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है. फर्स्ट
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है इमेज, वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट भी है, इरेक्ट। थर्ड, साइज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपने कितना छोटा लिया था, स्मॉलेस्ट साइज, एंड दिस इज बिगेस्ट साइज, मीन्स साइज ऑफ इमेज इज मैग्निफाइड, मैग्निफाइड, डायमेंस्ड, ओके, मैग्निफाइड लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट image formation. Okay student, we will discuss next. Now student, discuss image formation by convex lens when object placed at the focus. जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे. You know student, be saying that the object is at the focus of a convex lens, we can say that the object is at the distance equal to the focal length f. This is focal length distance between. Okay, now the lens is of formation at bend, object placed at the focus, so in this figure. Now the object A be placed at the focus f dash. This is f dash. जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पर, ओके, of a convex lens, a parallel ray light AD pass through the focus f. This is AD, parallel incident, then pass through the focus f. Okay, parallel incident हुई convex lens पे, कहाँ से होकर जा रही है, कहाँ से पास हो रही है, focus f से. Okay, clear. Now a parallel ray AD pass through the focus f. This pass through the focus f. This is S f. Okay, clear. Now the passing through the center of curvature. If center of curvature, second ray pass through the center of curvature. Okay, clear. Now the two ray reflected ray dx and dy, dx and cy. Okay, reflected ray. This is incident ray. This is incident ray. That is reflected ray. Okay, clear. Are parallel to the and another. Okay, clear. Now in these parallel rays will intersect. Okay, intersect and intersecting. Okay, intersecting. Where? Yes, no. No, this parallel ray will be intersect for meet at a point of since to form image at infinity. Okay, मतलब ये intersect करेंगी क्या, नहीं करेंगी कहीं भी, no, तो not intersect, तो ये सीधी चली जाएंगी, जाती जाएंगी, कहीं मीट नहीं करेंगी, और कहीं मीट नहीं करेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इन्फिनिटी. ओके, क्लियर. मीन्स इमेज क्या बनेगी, कंक्लूडिंग कंडीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्टली image position at focus, image position at infinity, second at the nature inverted. Okay, real and inverted. Okay, clear. And size of the image, size of image, student giving me answers. Size of image, the size of image highly and enlarge. Okay, enlarge, highly. Okay, clear. Now we will discuss next formation. Now student, discuss next formation. This is very important. Object between f dash and 2f. जब फोकस को फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बीच में रखा तो किस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हम देखेंगे. नाउ हियर we will discuss. You know, we by saying that the object placed between focus first and focus second. Okay, clear. Now by for the object is distance greater than the focal length of f but less than the twist of focal length 2f. So whatever say that object, okay, object is between f dash and 2f, clear, 2f dash. Okay,
clear. Now or between the focus focal length and f and f dash means फर्स्ट फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं और सेकंड के लिए आप 2 लगा लीजिए, ठीक है, क्लियर, सेकंड फोकल लेंथ के लिए. नाउ इट्स मीन दैट दी सेम थिंग फॉर फिगर दिस फिगर नंबर 3 C, okay, figure C. Then so that the object A be placed between focus first and second focus, where is object, clear. Now a ray of light AD, okay, ray of light, this is ray of light, ray of light, okay, ray of light AD, okay, ray of light AD which parallel to the principal axis of convex lens, okay. Now a ray, second through pass through the focus, clear. Now second pass through the second ray of light pass through the optical center, okay, clear, clear. The lens goes straight line means that the first reflected ray at the point A meet and second is this point A intersecting, okay. जहाँ ये दोनों रे मिल रही हैं फर्स्ट रे एंड सेकेंड रे, वहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा. I repeat student, draw the A dash B dash firstly, okay. It's we place the screen, okay, the face real image, okay, real image of point A of the object. Firstly we draw A dash and B dash, then get the complete image A dash and B dash. If we place the screen, okay, we can receive the image A dash B dash on the screen. It should be noted that the image is larger than of the object or magnified, found by 2f on right side, clear. ये object छोटा है, इससे थोड़ी magnified बनेगी, clear. Now concluding this condition, image, where is image position? Position is behind the 2f, okay. देखिए आप यहाँ पर बन रही इसके पीछे साइड, ठीक है, क्लियर. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए आप उल्टी इमेज बन रही है, ये सीधी है, ये उल्टी है. साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, ये ऑब्जेक्ट छोटा था, यहाँ बीच बड़ी बन गई, ठीक है, क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट. Now student discuss next topic, image formation by convex lens, object placed at the focus 2f focus, okay. You know student, by saying that the object placed is 2f dash means it means that the object is at a distance, okay, equal to twist of the focal length of a convex lens. In other words, the object placed at a distance 2f is 2f, okay, from the convex lens, from this figure, so figure number D, okay. Now AB placed at a distance 2f, distance is 2f, clear, 2f from the convex lens, okay, twist focal length, twist of a focal length, clear. Now from a convex lens a ray of light AD incident parallel to the principal axis, this is principal axis, get reflected and pass through the focus F, first focus, okay. Then second, you know student, a ray of light AD which is parallel to the principal axis through the focus after reflection, okay, then and goes the direction of DF, suppose DF, where is DF, DF direction, focus F direction, okay. Another ray AC, this is optical center AC, pass through the convex lens and goes straight line, okay, goes straight line and meet the first reflected ray of a point A here, clear. आपके पास एक convex lens है, ठीक है, फर्स्ट रे पैरेलल इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस एफ से होकर गई, किसी एक पॉइंट ए पॉइंट पर क्या हुई मिली, सेकेंड रे भी रिफ्लेक्ट हुई जो कि स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होते सीधी चली गई और किसी एक पॉइंट पे ही मिल गई जिसका हमने नाम दे दिया ए डैश, क्लियर, ओके. नाउ
thus A dash is a real image of point A. Okay, real image of point A. Clear? Now, point A of the object, we draw the A dash B dash. A dash मिल गया आपको, B dash draw कर दी, perpendicular to the axis, get the complete image A dash B dash. Okay, clear? Now, its form 2f dash. Its form 2f dash at a distance 2f. At a distance of 2f, here to here. Okay, right side from the convex lens. This is right side of the convex lens. So this is case object of the image equal to a distance 2f each from the convex lens, but they are in are opposite sides of the lens. Thus, when an object placed distance 2f from the concluding, then where is the image formation? Position of the at the distance 2f on the other side of the lens. Okay, image formation. Clear? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड देखिए अपोजिट बनाइए ऑब्जेक्ट आपका राइट एंड दिस इज इन्वर्टेड. ओके, इन्वर्टेड एंड रियल. साइज क्या है? सेम साइज, जो साइज का ऑब्जेक्ट था जिस साइज का उसी साइज का आपका इमेज है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट. डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिहाइंड द टू सेकेंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस. सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है जो कॉन्वेक्स लेंस का. जब हमने ऑब्जेक्ट को वहाँ पर रखा उसके पीछे साइड, तो किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन है वो हम पढ़ेंगे. यू नो स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड बिहाइंड दी 2f. ओके, ऑब्जेक्ट को हमने सेकंड प्रिंसिपल फोकस के पीछे रखा हुआ है फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. ये फ्रंट साइज है. ठीक है, क्लियर. टू कंस्ट्रक्टेड रे डायग्राम, we first take a ray of light AD parallel to the principal axis, pass through the focus. Okay, after reflection we will pass through the focus, go in the direction df direction. Clear? This is df direction. A second ray pass through the light optical center. Okay, C will go straight direction of C A dash. This is C and this is A dash. Okay, clear. Thus A dash and B dash complete image of object AB, and it in the front formed by focus first, focal length first and second focal length. यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फर्स्ट फोकल लेंथ है, एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस सेकंड फोकल. ओके, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकल लेंथ. ओके, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस. क्लियर? नाउ फ्रॉम द अबव डिस्कशन, the image real, inverted, smaller than the object. From the above discussion we calculated when the object placed behind 2f. Okay, principal focus behind 2f in front of convex lens, then the image form is. Position देख लेते हैं. Image position between f, focal length first and focal length second. Focal length first, focal length second. Okay, clear? In other side of the lens, other side of the lens. रियल देखिए नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है. यहाँ ऑब्जेक्ट सीधा है, यहाँ उल्टा इन्वर्टेड. ओके, साइज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट. इस आपका ऑब्जेक्ट बड़ा था, ये छोटी इमेज है. मीन्स जब हम यहाँ रखते हैं फोकस बिहाइंड दी फोकस ऑब्जेक्ट को, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन focal length first and second focal length of on the other side of the lens. Okay, clear? Now discuss last image formation by convex lens object at infinity. You know student, when object is at the considerable distance, we say that the object at infinity. Suppose the object AB in AB, okay, this is AB, in the form of the arrow of pointing upward. Okay, AB, upward direction, this is objects. Okay, clear? Now it is a considerable distance from the convex lens, since the we say that object is a very far off from the lens. It has not been seen in this figure, but imaginary form. The are the diverge of beginning from the parallel to, suppose AD is a ray of light parallel to the another one ray reach at the lens after traveling along long distance. So far we have two rays AD and AC. Okay, this is C, AD and AC. Okay, this point is optical center is C, coming from the same point A of the object.
this is same point A and A. Okay, now raise AD and AC parallel to another butt, AD and AC parallel to the another, get reflected along DX direction and CY direction. First reflected ray DX direction, second CY direction. Now A dash is the A dash. Where is A dash? Where is this A dash? But the incident AD get reflected, pass through the focus, then C it goes straight line. Okay, straight line along CY direction. Then meet the first reflected ray A dash and second meet reflected ray A dash. This point formation of image. Okay, means thus the A dash of a real image. Okay, of the top point A of the object. We draw the A dash B dash perpendicular to the axis of A dash. Okay, now thus the A dash B dash complete image of the object AB placed at infinity. Clear? Clear. Concluding this of image formation at the focus F. Where is the position of image? Focus F. Okay, this is focus of. At the focus, nature real and inverted, right, much smaller than size, much smaller than the object of highly dimension. देखिए much smaller than the object. ऑब्जेक्ट आपने मान लीजिए इन्फिनिटी पे बड़ा रहा तो ये ऑब्जेक्ट छोटी दिखाई दे रही है. ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास rule for obtaining concave lens. Okay, and uses. Thank you so much.